Good morning to everyone. Am I audible properly? Yes, good morning, Sravani. Am I audible properly? Am I audible properly? Yes, sir, audible. Okay. तबे जाए पिला केही ଆସିନାହାନ୍ତି. Still now no students are there. At least ତୁମର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ବି ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ message କରିଦିଅ for joining the class if you have any friends. So let's start the class. So ଏଇଟା ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 12ରେ ରହିଛି. ସାର୍ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ଶୋଇଥିବେ ସାର୍. ଆଚ୍ଛା, ଓକେ. ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କଲି କାରଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ, ବସିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ କଲି. ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ଡେରି କରିବା ଯଦି 6 AM କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିପାରିବିନି ବିକଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସମ୍ ୱାର୍କସ୍. ସାର୍ 5টাରେ ଠିକ୍ ଅଛି. ୟେସ୍, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିଲେ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ. ସେଇ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ମଚ୍ ମୋର୍ ଗୁଡ୍ ଟୁ have a good life. So ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍, you can see this is your unit 12A, aldehyde and ketone. So ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ aldehyde and ketone. What is aldehyde and ketone? The compounds, the organic compounds, you can note it also. Class ସମୟରେ ହିଁ ତୁମେ note down କରିପାରିବ. The organic compounds containing
C double bond O, carbonyl. C double bond O, that is your carbonyl. ମୁଁ ଚାରିଟାରେ ଉଠିକି ରିଭିଜନ୍ କରିକି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି. ଭେରି ଗୁଡ୍ ଶ୍ରାବଣୀ, ଗୁଡ୍. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଜୋସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠିବାର ଇଏ ହେଉଛି ଜୋସ୍, ଯେ ମୁଁ ଚାରିଟାରେ ଉଠୁଛି. ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଶ୍ରାବଣୀ, କାରଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠିଲେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ. ଦ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କଣ୍ଟେନିଂ C double bond O as functional group are known as carbonyl compound, are known as carbonyl compound. So carbonyl compounds are also known as aldehyde and ketone, having formula RCHO and RCOR dash respectively. ओके. सो आल्डिहाइड आउ कीटोन होउचंदी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गुडाक तुमरो CO ग्रुप थिबो ताको हमें कहबा आल्डिहाइड और कीटोन. CO ग्रुप थिले से गुडाक हमें कहबा कार्बोनिल. आउ से मानकर फर्दर जदि RCHO और RCOR डेस हुए वी कैन से देम एज आल्डिहाइड एंड कीटोन. ओके. सो जिबा वी विल गो फॉर IUPAC nomenclature. Give heading, that is IUPAC nomenclature. What is IUPAC? International Union for Pure and Applied Chemistry. So give heading, that is IUPAC nomenclature. So IUPAC nomenclature रे प्रथम हम देखिबा aldehyde. First we will go for aldehyde. What is the IUPAC nomenclature for aldehyde? The general formula for aldehyde is RCOH or RCHO. Okay. Aldehyde रो general formula होची RCHO, that is the general formula of aldehyde. ठीक अछि. So further if we go for R जगह जदि हमें H पकेबा, if we put R H in terms of R, then the molecular formula will be and this is your compound, name of the compound. Give IUPAC name and common name. So molecular formula जदि R जगह में H put करिबा, if we put H in terms of R, we will get HCHO, that is formaldehyde. HCHO, that is your formaldehyde. Your IUPAC name will be, common name will be formaldehyde. Sorry, the common name will be formaldehyde. And another thing,
it has a suffix. यार suffix गोटे थिबो और prefix गोटे थिबो. What is meant by suffix and prefix? It has a suffix, that is the suffix is al or aldehyde. al বা aldehyde যদি last को रहिछि, we can say this is a aldehyde group. Okay, and prefix हमें कौन नहीं परिवा, we can use the prefix that is your फॉर्माइल. प्रिफिक्स होची या पई फॉर्माइल. जेतेबेले तुमरो गोटे कार्बोक्सिलिक एसिड थिबो सेतेबेले प्रिफिक्स यूज करा जिवो फॉर्माइल. फॉर्माइल तो HCHO. HCHO माने एठी नंबर ऑफ कार्बन केतरा अछि, हाउ मेनी कार्बन आर हियर. हाउ मेनी कार्बन्स आर हियर श्रावणी, केतरा कार्बन अछि एठी. 1. So 1 थिले we will put as myth. गोटिए ग्रुप थिले we will put it as myth. हमें myth दबा, right. So इठी हमें myth लिखिवा. It is alkane group, so methan, methane. Then यार suffix लिखा है al, so methanol. It will be methanol or methanaldehyde or methanaldehyde. ठीक है. फर्दर आर जगह में CH3 पुट करिवा. आर जगह इफ यू प्लेस CH3 C डबल बॉन्ड OH, then what is the name of the compound? यार IUPAC name कौन आसीबो? What is the IUPAC name for the CH3CHOL? What is the IUPAC name? यार common name. This has common name, that is acetaldehyde. Acetaldehyde यार common name आसीबो acetaldehyde. But what about its IUPAC name? यार IUPAC name कौन हबो? Next, IUPAC name. What will be the IUPAC name of acetaldehyde? Ethanol. Very good, Pratibha. Ethanol. So this will be ethanol. Further, next C2H5 C double bond OH. What is its IUPAC name? Common name ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାରେ କହିଦେଉଛି. It is common name, that is your propionaldehyde. फर्दर आम नहीं पार C2H5CHO रो प्रोपानल. वेरी गुड प्रतिभा. नेक्स्ट C3H7 C डबल बॉन्ड O CHO C4H9 C double bond OH, that is C5H11 C double bond OH. What about the IUPAC name? Common name. Further IUPAC name कौन आसीबो? फर्स्ट कंपाउंड रो butanol. Very good Shravani, butanol. Then next तापरडा कौन आसीबो? pentanol. butyldehyde. butyraldehyde. butyraldehyde. The common name will be butyraldehyde. pentanol, pentyldehyde. This is your butyraldehyde. Sorry. Hexanol. Very good. And this is pentanaldehyde. And after this common name will be same, and it is your hexanaldehyde. butanol. It is जदि हमें अलगा ग्रुप नहीं जीवा, like if we place another group, that is your aromatic
C6H5 group, and then C6H5 CH2CHO group. What will be the name in the first case? First case ro name कौन हबो? What will be the name in the first case? यार कौन आसियो? यार कौन आसियो? What will be the name further? Anyone? प्रतिभा टिके स्पीड अप हो जद्वारा आम अधिक अधिक कंटेंट कवर कर तुम्हें मैंने जिते स्पीड अप हम मुझे अधिक कंटेंट कवर करी इन ए क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जिते रेगुलर रहिबो आई विल बी वेरी प्लेजर टुवर्ड्स इट ओके या नाम मु कहि दोची दिस इज द नेम दैट इज योर benzaldehyde. This is your benzaldehyde. Okay, it is the name that is benzaldehyde. Your name as jiva benzaldehyde, and it has name that is benjanal. It is the name that is benjanal. So what is the common name of benzaldehyde further? The common name will be phenyl methanol, because you will find one CHO and this is phenyl ethanol, right? Phenyl ethanol, and this is your benjanal. This is also benjanal. Is it clear? बुझी पारला समझते? Phenyl ethanol hexanal. Yes sir. Okay, next we will move towards the IUPAC name of ketone. So it was all about the IUPAC name of aldehyde, then we will go for ketone. Here is your ketone group. What is the कि कहि परिबो prefix कोन and suffix कोन for ketone group? It is general formula that is RCOR dash. What is the suffix and what is the prefix for ketone group? What is the suffix and what is the prefix for this group? Suffix कौन हम ketone group पाई पिला माने कहीं मॉर्निंग रे उठिबा को चेष्टा करो बिकॉज आमे जदि सोउथिबा एभलिया सोई रहिथिबा आ बेसी लेट नाइट जाए पढ़िया अपेक्षा मॉर्निंग रे उठिकी पढ़िबार फ्रेशनेस बहुत अलग रही प्रतिभा हैज टोल्ड ketone no suffix will be one and prefix will be oxo. Okay, suffix will be one and prefix will be oxo. ठीक है, good. Then we will go for the IUPAC nomenclature further. So molecular formula. Shravan is telling that it has
ketone has prefix, that is your ketone has suffix, that is on. Is it clear? Sorry, she is saying that the ketone has suffix, that is keto. Yes, yes, it has suffix, that is ketone. Ketone is also another suffix, but there is no keto group. It is just ketone. Sorry for this. Prefix keto or oxo. Prefix keto or oxo. Right. Prefix keto or oxo. Molecular formula. Molecular formula. Then this is your IUPAC name, and another is common name. देखिए पिला जदि 6टा बेले कहती ताले कालीटू 6 AM रे क्लास करिवा देखिबा molecular formula further r जगह हमें remember we cannot put h in terms of r and r dash because h हमें जदि put करिवा it will be your aldehyde, that is formaldehyde, so we cannot put h here. So the starting compound will be CH3COCH3. The starting compound will be CH3COCH3. Okay, remember this is the starting compound. So CH3COCH3, it has a IUPAC name. It has the IUPAC name, that is your wait. It has the common name, that is acetone. Yara common name hoche acetone. What about its IUPAC name? If we go for numbering the carbons, then you can see 1, 2, 3. 3 carbons are here. That's why college roche. So a time ta thik achi. Okay, Shravani. So there are 3 carbons. That's why if we see here propane 2N. Very good, Nikki. So as there are 3 carbons, that's why you can put propane, and in 2, that is 2ONE. So it will be propane 2ONE or 2-propanone. The compound will be 2-propanone further. Okay, very good. Pratibha and Nikki, both of you have done a good work. Next we will move towards C2H5 COCH3 dimethyl ketone. It is the common name. Very good. It is the common name, that is dimethyl ketone, because if you see here there are 2 methyl groups. It is 2 methyl group roichi gote ketone ro this side re, that's why it is dimethyl ketone. Okay, C2H5 COCH3, C3H7 COCH3. What about its common name further? एमानଙ୍କର common name कौन हबो? Butane 2ONE. Pratibha has told it has common name, that is IUPAC name, that is butane 2ONE. Very good. Or 2-butanone. Further a compound IUPAC name is your pentane 2ONE. It has IUPAC name, that is pentane 2ONE. Further यार भी तुम्हें यदि देखिबा it has common name, that is methyl ethyl ketone. So आमे alphabetically आगे लिखले ethyl, E प्रथमे लिखिबा ethyl, then methyl ketone. Alphabetically if you write here ethyl methyl ketone. Further pentane 2ONE it will be propyl methyl. No, it will be methyl propyl, because M first then propyl. Methyl propyl
कीटोन ना आमे वी कैनॉट पुट प्रोपानोन प्रतिभा प्रोपानोन बोली कि आमे लिखि परिबा नाही वी कैनॉट पुट प्रोपानोन बिकॉज फॉर प्रोपानोन इट विल बी योर नंबर रहिबा दरकार कीटोन ग्रुप कोठी रछि you have to you should maintain the number further. Another is Cl CH2 C sorry eta pore kariba we'll go for another question. C6H5 CO CH3 5CO C6H5 that is your benzene. Okay, what about its name further? यार नेम कौन हम इथाइल प्रोपाइल कीटोन. yes इथाइल प्रोपाइल कीटोन. इथाइल प्रोपाइल कीटोन no there is no ethyl propyl ketone मु फर्दर आउ करिनी आउ ताको आगु बढ़ेनी आई जस्ट कवर दैट सेटिंग कवर कर देछि. Acetophenone, very good. The name will be your acetophenone. Any name, okay, it has name that is acetophenone. Next, and another name will be your benzyl methyl ketone or phenyl methyl ketone. What which name will be more applicable, phenyl methyl ketone or benzyl methyl ketone? Could have answer, benzyl methyl ketone or phenyl methyl ketone. The name will be your benzyl methyl ketone. Common name will be benzyl methyl ketone. Okay, what about next one? Yana कौन हबो next कौन हबो yana? What about the next name? तुम्हें माने लिखु था प्लस आंसर कर था अदरवाइज यू मे लूज. सो क्लास करबा समय ही आंसर लिखि दियो सो दैट इट विल बी मोर इजियर टू यू. The name for this compound will be your a compound by name आसीबो हमरो benzophenone. Okay, this is your benzophenone, and further it is the common name that is your dibenzyl ketone. As you can see there are two benzyl groups, that's why dibenzyl ketone, and this is your this has the name that is benzanophenone. Okay, or you can say this is your this compound has name that is your benzyl benzyl ketone. Benzyl means CH2 जदि रहिबो you can say it as benzyl. Okay, जदि CH2 रहिबो leave it. जदि तुमे ए जिंसटा न बुझी परछ it is not necessary for our CHSE. एवढा कंपाउंड बहुत कम रुहे
leave it if you could not understand. Then we will go for एठी हमर सरला IUPAC name. I am not spending more time for IUPAC nomenclature. Next we will go for method of preparation. Okay, so method of preparation, first we will look towards from alcohol. It is from alcohol. One number, that is from alcohol. So you can have the name जे alcohol रे हमें लिख परिवा that primary alcohol and secondary alcohol undergo oxidation in presence of oxidizing agent like KMNO4, acidified KMNO4. These are the oxidizing agent. पिलाने मन रखो acidified potassium permanganate or acidified K2Cr2O7, that is potassium dichromate, to produce aldehyde and ketone respectively. So माने aldehyde और ketone देवे को गुड़ा को ना primary और secondary alcohol गुड़ा को aldehyde and ketone respectively. They will produce aldehyde and ketone respectively. So what about its further reaction strategy? So reaction strategy जो देम देखिवा, we can have that RCH2OH याको जेतेबेले हमें ऑक्सीडाइज करिवा, रिमेंबर whenever we oxidize it using KMNO4 or acidified K2Cr2O7, here dita hydrogen remove हो जिवा plus oxygen एठी add हो जिवा. So you will get a byproduct, as you will get a main product, that is RCOH plus H2O. How can you remember this? Now you can see that एठी तुम्हारा गोटे H अच्छी, एठी गोटे H अच्छी. ओके, एठी गोटे H अच्छी, एठी गोटे H अच्छी. सो ये दीटा H बाहरी गला और एठी गोटे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गला. ये दीटा H बाहरी गला और एठी गोटे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गला. फर्दर से दीटा H ऑक्सीजन सहित मिसिकी तुम्हारा H2O दे देला. ठीक अछि. एई भलिया तुम्हारा अल्कोहल रे हमें कोन पाइबा, we will get the aldehyde from alcohol. ठीक अछि. Then another reaction is ROH plus H2O. RCHO बनी की. Further another reaction is RCH2R dash, because it is your secondary alcohol. Secondary alcohol माने it will be like this. ये भलिया हबो. ये गला प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को भलिया हबो CHR dash ROH. ओके, सो टोटल आम देखिबा चारटा ग्रुप RCHR dash OH. This is your secondary alcohol which undergo oxidation in presence of acidified K2Cr2O7, that is K2Cr2O7 और H2SO4. H2SO4 देले acidify हो जिवो to produce the compound, that is RCOR dash plus H2O as byproduct. Okay, so this is the general methodology for how can you prepare aldehyde and ketone from alcohol. Next is you can put CH3 or H in terms of R. तो प्रथमे हमें प्राइमरी अल्कोहल रे CH3 पुट करिवा, सॉरी H पुट करिवा.
So H CH2OH, further CH3 CH2OH, further C2H5 CH2OH, then C3H7 CH2OH. Okay, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, we will oxidize them. Also there is C4H9 C4 no benzene ଦେଇଦେବା। CH2OH. Okay, further we will go for oxidizing them. So we will use the nascent oxygen. nascent oxygen यूज करिया तार अर्थ बहुत मात्रा रे हमें ऑक्सीजन को कौन करिवा यूज करिवा। सो प्रथम केस रे कौन आसीबा प्रोडक्ट जेतोले हमें KMNO4 यूज करिवा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन द फर्स्ट केस। सेकंड केस रे कौन आसीबो, फर्स्ट केस रे कौन आसीबो को गोटे गोटे आंसर को, व्हाट विल बी द आंसर इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड, ट्राई टू गिव द आंसर फर्दर। प्रत्येक आंसर कौन हम, सो जदि आम SCH2OH कथा कहबा, एटी तुमरो दिस ग्रुप विल बी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ए कंपाउंड रो नेम विल बी योर मिथानॉल। व्हाट हैपेंस व्हेन मिथानॉल इज ऑक्सीडाइज्ड, मिथानॉल को जेतबेला हम ऑक्सीडाइज करबा सेतबेला हम कोन पाइबा, पुनी इथानॉल को जेतबेला हम ऑक्सीडाइज करबा सेतबेला कोन पाइबा, व्हाट विल बी द आंसर। प्रोपानॉल को जेतबेला हम ऑक्सीडाइज करबा, व्हाट विल बी द आंसर। What happens when butanol is oxidized further, and what happens when benzyl alcohol is oxidized further? It is not phenol, it is your benzyl alcohol is oxidized further. कौन आसीबा प्रोडक्ट फर्स्ट केस रे, समस्त सुनी पारछ आई थिंक, वॉइस कोटी वॉइस तो कटुनी आई थिंक नो, कौन हम प्रोडक्ट तो आमको कही दूँ SCH2OH या जो ऑक्सीडाइज करवा यूजिंग KMNO4 SCHO, वेरी गुड श्रावणी, प्लस H2O, तो फास्ट आसीबो SCHO, that is SCHO plus H2O, and this compound will be your, the name of the compound will be formaldehyde। तापर एडी आसीबो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CHO, फर्दर एडी आसीबो C2H5 C double bond O, that is C2H5 CHO, C3H7 C double bond O CHO, further C double bond O CHO, sorry, C double bond OH, that is CHO. So what is the name of the first compound? First compound ro na kon habo, what will be the name further? The name will be your formaldehyde by methanol. Methanol is the IUPAC name and formaldehyde is the common name, and this is acetaldehyde, that is the common name, and ethanol is the IUPAC name. Further, this is your propanaldehyde is the IUPAC name, sorry, common name, and propanol will be the IUPAC name. This is butyraldehyde is the common name, and butanol will be the IUPAC name. 80 कौन आसीबो, this will be your benzaldehyde. The compound, the name of the compound will be benzaldehyde. Okay, ए कंपाउंड रो ना कौन आसीबो, benzaldehyde. Is it clear? कार किछि डाउट अछि? If you have any doubts, please ask me. जदि क्लियर हला, please tell me that yes sir, it is cleared. Yes or no? जदि डाउट अछि सर टिके वेट,
Okay, 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 I'm waiting here. Waiting. ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ମିଥାନଲକୁ ଯେତେବେଳେ ୟେସ୍ ସାର୍, ମିଥାନଲକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଲକହଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁଜଫୁଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ବେଶୀ ୟା ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ମାନେ ଆମର ଯଦି ଆମେ CHSE ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ୟାକୁ ବେସ୍ କରିକିରି କ'ଣ ଥିବ ନା ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଯେଉଁଠି ତୁମର ଏଇଟା 1 to 2 ମାର୍କ କ୍ୟାରି କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟଅପ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଯେ KMnO4 ବା ଏସିଡିଫାଇଡ୍ K2CR2O7 ୟୁଜ୍ କଲେ ତୁମର ଆଲକହଲରୁ ଆଲଡିହାଇଡ୍ ଆସିବ। ବଟ୍ ଦ ଆଲକହଲ ମଷ୍ଟ ବି ୟୋର ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଲକହଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଲକହଲ ହେଲେ କିଟୋନ୍ ଆସିବ। ସୋ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଲକହଲକୁ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ କଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଦ aldehyde further. Okay, then what about the secondary alcohol? It is in the primary alcohol ହେଇଗଲା, ଏଇ reaction complete ହେଇଗଲା। next we will go for this secondary alcohol ସେଭଳି ଆମେ put କରିବା। ଶ୍ରାବଣୀ, is it clear? CH3, remember secondary alcohol ପାଇଁ ଆମକୁ minimum R ଆଉ R dash ଜାଗାରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? CH3 put କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। there is no alternative further. So CH3, then C2H5, CHOH, further CH3, C3H7, CHOH. Next CH3, there is your benzene, CHOH, ऑक्सीडाइज करवा आमे ए अल्कोहल गुडाको। दिस आर द सेकेंडरी अल्कोहल्स। ओके, यूजिंग एसिडिफाइड K2CO2O7, दैट इज योर आमे नहीं परिबा H2SO4 प्लस K2CR2O7। H2SO4 नबा जोड़ा कि एसिडिफाई करबा मीडियम टाको, देन K2CR2O7। Remember H2SO4 और K2CR2O7, these are acidified potassium dichromate is an oxidizing agent. So you should have clear data that acidified K2CR2O7 is an oxidizing agent. KMnO4 is also an oxidizing agent. Even sulfuric acid also acts as oxidizing agent, but in rare case it happens so. But you can use that this acidified K2CR2O7 as your oxidizing agent. So it हमें further जदि हमें नबा नले what will be the name of the compound? CH3 plus H2O, CH3COCH3। ओके, CH3COCH3 এই কম্পাউন্ডর না কোন হবো? 1 2 3 তিনটা কার্বন আছে। সো দিস উইল বি योर propane 2OL, propane 2OL। तो এই কম্পাউন্ড গুড়াক না সমস্তে মতে কুহ কোণ হব? व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड? और वी कैन से प्रोपाइल अल्कोहल भी कहि परिबा, प्रोपाइल 2 propane 2OL। दिस इज द कॉमन नेम, सॉरी IUPAC नेम। propane 2OL होची तुम्हारा IUPAC नेम पुट कर देबा। सो नेक्स्ट CH3, देन दिस इज CH3, एटी CHOH बदल रे हमर हे जो CO, कारण एटी गोटे H एठू गोटे H बाहरी की पळेबो। ओके, तुम्हारा एठू गोटे H एठू गोटे H बाहरी की पळेबो, दैट जा द्वारा हमर कंपाउंड हे जिवो this hydrogen, and this hydrogen will be removed further. Okay,
फर्दर ये आसो CH3 C double bond O C2S5, then CH3 C double bond O C3S7, further CH3 C double bond O benzene plus water as byproduct. Remember ये water जदि byproduct होची ब्यूटेन 2OL very good श्रावणी एंड निकी वाटर जदि बाय प्रोडक्ट होची ताहले तुम्हारा नेसेंट ऑक्सीजन यूजेज बट इफ H2 इज ए बाय प्रोडक्ट देन नो नेसेंट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड सेटा हम देखिबा दैट इज नोन एज डिहाइड्रोजनेशन तो ऑक्सीडेशन गोटे डिहाइड्रोजनेशन गोटे दीटा अलग अलग जिनस सो ये आ गोटे जिनस आम ऐड करबा फ्रॉम अल्कोहल by means of oxidation by oxidation आगोटे भी देखिबा from alcohol by means of dehydrogenation it is also important catalytic dehydrogenation so further the name will be this is butane 2OL very good Stravoni and Nikki and this is your pentane 2OL or 2-pentanol and this compound is your further a compound रो ना कौन हम methyl benzyl methanol or what will be the name further butane 2OL the name will be your movie टिके confuse होची benzyl sorry 1-benzyl ethanol 1-benzyl ethanol और 1-benzyl ethanol तो जदि हम देखिबा एटा गोटे इथानॉल ग्रुप केमदी या को इथानॉल बोली कहि परियो दिस इज 1 2 ठीक अछि 1 2 हेले ए ग्रुपटा को पूरा ग्रुपटा को हम इथाइल ग्रुप कहि परिबा ठीक अछि then one portion रे benzyl अछि so 1-benzyl ethanol the name will be 1-benzyl ethanol and a compound रो name हबो your acetone or propane 2ONE a compound रो name हबो butane 2ONE or methyl methyl ketone a compound रो name हबो methyl propyl ketone or pentane 2ONE this will have pentane 2ONE a compound रो ना हबो acetophenone नेक्स्ट आम जदि दीटा बेंजीन ग्रुप रखिबा C6H5 and another C6H5 then CH2OH या को जतबेला आम ऑक्सीडाइज करिबा यूजिंग KMnO4 what will be the product it तुम्हारा product कौन आसीबो this is your benzophenone the product will be your benzophenone okay the product will be benzophenone further और डाइबेंजाइल कीटोन भी होगा बेंजोफेनॉन और डाइबेंजाइल कीटोन बेंजोफेनॉन और डाइबेंजाइल कीटोन एंड दिस इज योर डाइबेंजाइल मिथानॉल दिस इज डाइबेंजाइल मिथानॉल मिथानॉल एइथिपई कारण हमरो ए ग्रुपटा पई वी विल हैव द नेम दैट इज मिथानॉल यार दीटा बेंजीन ग्रुप थिबा जोगु दिस विल बी डाइबेंजाइल मिथानॉल इज इट क्लियर
मु किछि एग्जांपल बर्तमान दूची बर्तमान तुम काम हला याको ऑक्सीडाइज कले हमें कौन कौन पाइबा कहबो ठीक अछि द क्वेश्चन इज मु किछि एग्जांपल नेबी यू हैव टू टेल व्हाट विल बी द आंसर फर्दर yes this is your butane 1 OL not 4 OL butane 1 OL butane 2 OL pentane 3 OL 1 pentanol next benzyl methanol बा 1 benzyl methanol कौन आसीबा प्रोडक्ट एठी फर्स्ट केस रे जेतोले हमें ऑक्सीडेशन करबा कौन आसीबा प्रोडक्ट एगुडा को आंसर को दिस आर द आंसर्स ऑफ दिस these are the practice based questions so what will be the product here फर्स्ट केस रे कौन आसीबो प्रोडक्ट सेकंड केस रे कौन थर्ड रे कौन प्रथमे फर्स्ट रे कौन आसीबो प्रोडक्ट को ब्यूटेन 1 OL को जेतबेले हमें ऑक्सीडाइज करबा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ब्यूटेन 1 OL को जेतबेले हमें ऑक्सीडाइज करबा प्रोडक्ट कौन आसीबो यू नीड नॉट टू राइट दिस जस्ट यार आंसर केवल को कारण ए सब एग्जांपल हमें ऑलरेडी करि सरछे केवल आंसर को व्हाट विल बी द आंसर ब्यूटेन 1 OL को जेतबेले हमें ऑक्सीडाइज करबा सेतबेले कोन आसीबो आंसर कोन हबो प्रोडक्ट यूजिंग KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्यूटानॉल नो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट मते केवल डायरेक्ट प्रोडक्ट दरकार कौन हबा प्रोडक्ट ब्यूटेन 1 OL को ऑक्सीडाइज करबा ब्यूटेन 2 OL को ऑक्सीडाइज करबा पेंटेन 3 OL को ऑक्सीडाइज करबा 1 पेंटानॉल इज ऑक्सीडाइज्ड 1 बेंजाइल मिथानॉल इज ऑक्सीडाइज्ड तो एग्जाम रे एभला डायरेक्ट थिबो कोनसी स्ट्रक्चर ने दे नथिबो से अनुसार हमको आइडेंटिफाई करिया कहिया को पड़िबो what will be the answer if we choose butane 1 OL what will be the answer if we choose butane 2 OL pentane 3 OL etc so first question रो first answer कौन हबो butane 1 OL को CH3 C3H3 COCO plus H2O no this is not the right answer श्रावणी butane 1 OL को ऑक्सीडाइज कला में कौन पाइबा speak out what will be the product if we oxidize butane 1 OL butane 1 OL को ऑक्सीडाइज कला में कौन प्रोडक्ट पाइबा butane 1 OL को ऑक्सीडाइज कले what will be the product anyone कुह at least try to solve the answer butane 1 OL को ऑक्सीडाइज कले हमें कौन प्रोडक्ट पाइबा then तापर हमें butane 2 OL केस को आसीबा but what about butane 1 OL butane 1 OL को ऑक्सीडाइज कले हमें कौन पाइबा केवी को okay it is taken as homework for you butane 1 OL को ऑक्सीडाइज कले कौन आसीबो प्रोडक्ट दिस इज ए होमवर्क फॉर यू सो नेक्स्ट क्लास रे यार आंसर कहबो ओके butane 1 OL को ऑक्सीडाइज कले कौन आसीबो प्रोडक्ट दिस इज द होमवर्क फॉर यू
and you have to tell the answer in the next class. Okay, ठीक अच्छे। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଚାହିଁବି ଯେ ବହୁତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ପିଲା ଯେମିତି ଜଏନ୍ କର କ୍ଲାସ୍ରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା ଆହୁରି ଇଜି ହେବ। 5ଟାରୁ 6ଟା ହିଁ ରଖିବା ଶ୍ରାବଣୀ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ। ନାହିଁ ଯଦି ତୁମର ଯଦି 5ଟା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ୱି କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ସୁଇଚ୍ ଫର୍ 5:30, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି କହିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ ବ୍ୟୁଟାନଲ୍, ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ ଅଲଗା ନିକି, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟାନଲ୍। ବ୍ୟୁଟାନଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଇଠି ବ୍ୟୁଟାନଲ୍ ଆସିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। तो जो मैंने भी क्लास करि ना, जदि तुम सांगसाथी कहीं भी क्लास करिना से कहीदियो जे मॉर्निंग रे एमती गोटे क्लास हो 5 AM उठापी सुविधा हे आ क्लास करने को बहुत इंटरेस्ट आसो मॉर्निंग रे क्लास हेले। किंतु जदि तुम्हें से लेट आवर रहिबो लाइक 6 AM बहुत पिला भी असुविधा, लाइक श्रावणी भी कहते असुविधा, बट जदि तुम असुविधा अच्छे वी कैन गो फॉर 5:30 AM ऑल्सो। द प्रोडक्ट विल बी ब्यूटानल not butanol, this is your butanol ହେଇଯିବ butanol। सो मु आउ थे कही रखुची जदि पिला माने जो माने भी चाहूच जे मॉर्निंग क्लास यू कैन जॉइन अप विथ मी, बट द टाइम विल बी एज यूजुअल, दैट इज योर 5 PM सॉरी 5 AM 5 AM। हाँ इट मे बी आउ अध घंटा डेरी रे क्लास हो पारे, राइट ओके, अध घंटा डेरी रे क्लास हो पारे, बट यू शुड बी अलर्ट दैट द क्लास विल बी टेकन एट 5 to 5:30 AM डेली। सो से अनुसार समस्ते प्रिपेयर होगी रुह, जद्वारा मॉर्निंग उठिबार भी अभ्यास हम। मॉर्निंग उठी सारा पर क्लास कला ओबियसली भल लगिला पुणी आउ थे तुम्हें पढ़ारे बस। अदरवाइज तुम टाइम जदि मॉर्निंग रे उठिबार अभ्यास न रहिबो ताहले यू मे लूज सो मेनी थिंग्स, that's why I am telling like this। जदि ना हम 5:30 to 6:30 रखा टाइमिंग फॉर स्टडी, बट सो मेनी स्टूडेंट्स सेकेंड टा CS3 COC to S5 वेरी गुड। व्हाट इज द नेम फर्दर? ओके ए जिनसा टास्क रोचे फॉर टुमारो, इट इज ए होम टास्क फॉर यू, दैट व्हाट विल बी द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास यू हैव टू टेल। ठीक अच्छे, ये गोटे टास्क रहा, ये सब गुड़ा आंसर तुम्हें नेक्स्ट क्लास रे कहबो। ठीक अच्छे, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग द क्लास एंड आई विश ऑल द स्टूडेंट्स कैन ब्यूटेन टू विन। वेरी गुड। अन्य माने समस्ते तुम सांगसाथी मानक जमी इनफॉर्म करियो फॉर दिस क्लास, सो दैट वी कैन बी अलर्ट फॉर दिस एंड इट विल बी मोर इजियर टू देम टू अंडरस्टैंड द क्लास। आउ it is applicable both for CHSE 2022 2023 also, कारण 2023 एमती बैच स्टार्ट हो गलानी सेकेंड ईयर बहुत जगह, आ 2022 एग्जाम एवं हम आगू डेरी अच्छे एप्रिल लास्ट वीक एप्रिल 28 रु जोटा स्टार्ट हम, से बोथ द क्लासेस बहुत हेल्पफुल हम aldehyde and ketone चैप्टर टा। ओके, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग द क्लास, थैंक यू अगेन।